hope everyone is in good health. Today I have come up with yet another video for you. Today's topic is a poem, Ecology by A K Ramanujan. As you all know, A K Ramanujan is an Indian poet who writes in English. Now let's straight away go to the author's biography. A K Ramanujan, he was born in Mysore, which is in India, in 1929. He was a poet, a translator, a folklorist, and a philologist. And his major contributions in poetry we can see in the 3 volumes of his poems, which are The Striders, The Second Sight, and the collective poems of A K Ramanujan. And you have to keep in mind that A K Ramanujan, he was of the Indian origin, but he spent most of his life in America. And as far as his career is considered, he taught at the University of Chicago. You have to keep in mind that he dealt with issues such as hybridity and transculturation. Transculturation is the phenomena of merging and converging cultures. And hybridity is a cross between two races or cultures. मतलब ये कि क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के थे, अमेरिका में सेटल हुए थे, तो हमेशा जो वहाँ इंडियन ओरिजिन के लोग थे वो कैसे अमेरिकन पॉपुलेशंस के साथ मिक्सअप होते थे, कौन सी कल्चरल डिफरेंसेस रहती थी, वो हमेशा इनकी पोइट्री में जो है एक सेंट्रल रोल जो है प्ले करते हैं. और हमेशा इन्होंने अपने जो इंडियन ओरिजिन जो है इनका हमेशा उसकी तरफ एक नॉस्टैल्जिया से देखा. ये पोएम भी जो है जो आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इकोलॉजी. इन दिस यू विल सी two sides. One is the old generation and the other is the new generation. In this biography of his, we see that his 3 collection of poems received most popularity. That is Striders, which he wrote in 1966, then his selected poems in 1976, and The Second Sight in 1986. And his collection of poems, which he wrote in 1995, they fetched him an Sahitya Academy Award. But this award was given to him posthumously, that is after his death. Now let's try to know something about the poem Ecology, which we are going to deal with today. This poem Ecology is taken from Ramanujan's 3rd volume of poems, The Second Sight, which was published in 1986. The poem जो है Ecology, इसको रामानुजन की जो 3rd volume है poems की, Second Sight, उससे निकाला गया है. And this poem portrays Ramanujan's strong interest in the family as a very important theme of his poetic craft. In this poem, you're going to see Ramanujan's strong bonding with his family, particularly with his mother. इस poem में आप देखेंगे कि रामानुजन जो है वो बहुत ही एसोसिएटेड है, बहुत ही गहरा लिंक है उनका अपनी मदर के साथ. The poem is about the son's devotion towards his mother and a devotion to ecology that creates a kind of conflict in the poem. And what creates conflict in this poem is, on the one hand you have the poet's devotion towards his mother, and on the other side, in return, mother is devoted to ecology, to nature. And this creates a conflict in the poem. एक तरफ से बेटा जो है वो अपनी मदर के साथ उसकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, और दूसरी तरफ से क्योंकि इसकी मदर जो है शी इज़ फ्रॉम एन ओल्डर जनरेशन, उसकी जो है बॉन्डिंग ज़्यादातर नेचर के साथ है. एक नई जनरेशन जो है जो पोइट रिप्रेजेंट करता है, वो जनरेशन जो है उनका नेचर के साथ कोई भी लगाव नहीं है. बट जो मदर है क्योंकि वो पुरानी जनरेशन से है, उसका लगाव जो है नेचर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनकी. Here is a brief summary of the poem. This poem, it depicts the blind and innocent faith of an Indian woman.
And this Indian woman, she's represented by the mother of the poet. This poem is that after a long time the poet visits his home. और जब वो अपने घर आता है तो दूर से वो देखता है कि 3 रेड चंपक ट्रीज उसको नजर आते हैं. एंड ही फील्स इन हिज माइंड कि इन 3 चंपक ट्रीज ने मेरी माँ को सर दर्द दिया होगा. बिकॉज फ्रॉम द पोलन्स ऑफ दोज ट्रीज his mother, she suffers a severe migraine. And this poet of ours, he wants to cut down those trees. वो उनको काट देना चाहता है क्योंकि हर सीजन में जब भी पोलन्स निकलते हैं उन रेड चंपक ट्रीज से वो उसकी माँ को सर दर्द देते हैं. इसीलिए वो चाहता है कि मैं इन ट्रीज को कट डाउन करूं. बट व्हाट हैपन्स इज बिकॉज द मदर शी इज फ्रॉम एन ओल्डर जनरेशन शी डज नॉट वांट दीज ट्रीज टू बी कट डाउन. वो नहीं चाहती है कि जो ट्रीज है ये कट होने चाहिए. क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि these trees they are a sign of good omen. इन ट्रीज की वजह से because we know that older people they are more superstitious than the younger generation. तो उसकी जो माँ है वो चाहती है कि नहीं ये जो ट्रीज है ये हमेशा हर साल मुझे फ्लावर्स दे दूँ. और प्लस ये जो पेड़ जो है बचपन से मैं देखती आ रही हूँ और इन पेड़ों की वजह से ही एक गुड लक मेरे साथ हमेशा से रहा है. तो एक तरफ से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है मदर की टुवर्ड्स नेचर और दूसरी तरफ से एक प्रैक्टिकल व्यू है ऑफ द पोइट हु फील्स दैट बिकॉज these trees they give a severe headache to my mother, it's better to cut them down. On the one hand you have a practical approach and on the other hand you have a more superstitious approach, more traditional approach which is represented by the mother. Now let's first read the poem. The day after the first rain, for years I'd come home in rage, for I could see from a mile away our 3 red champak trees had done it again, had burst into flower and given mother her first blinding migraine of the season. With their street-long, heavy hung, yellow pollen fog of a fragrance no wind could sift, no door could shut out from our black-pillared house, whose walls had ears and eyes, scales, smells, bone creaks, nightly visiting voices, and were porous like us. But mother, flashing her temper like her mother's twisted silver, grandchildren's knickers, wet as the cold pack on her head, would not let us cut down a flowering tree, almost as old as her, seeded, she said, by a passing bird's providential droppings, to give her gods and her daughters and daughters' daughters basketful of annual flower, and for one line of cousins, a dower of migraines in season. Now let's look at the explanation of the poem. The day after the first rain, for years I would come home in a rage. Here the poet he talks about the time when he visits his home again. He has come after a very long time and then he is in rage, he is angry. Rage means being angry. तो ये काफ़ी सालों के बाद अपने घर लौटता है, मगर घर जब ये लौटता है इसके अंदर बहुत ही गुस्सा होता है और आगे हम देखेंगे ये गुस्सा क्यों होता है. For I could see from a mile away our 3 red champak trees had done it again. The poet, he is very angry and he sees when he returns to his home after many years have passed, he sees 3 red champak trees, and it's because of these 3 red champak trees that he becomes angry. The reason is that these 3 red champak trees they are a reason for her mother's migraine. ये जो 3 रेड चंपक ट्रीज दूर से जब पोइट देखता है, जब ये अपने घर आता है बहुत सालों के बाद, तो ये देखता है कि ये रेड चंपक ट्रीज क्योंकि समर सीजन है और इसके जो पोलन्स है इसको पता है कि उन पोलन्स ने मेरी माँ को एक सिवियर हेडेक दिया होगा. इसीलिए पोइट हमारा जो है ही इज इन रेज, ही इज इन एंगर. Had burst into flower
and given mother her first blinding migraine of the season. And these pollens, he thinks that these pollens, they must have given a blinding migraine. Here exaggeration is used. Blinding migraine का मतलब यहाँ पे है बहुत ज़्यादा सर दर्द. इन्हीं पोलन्स की वजह से उसकी माँ को हुआ होगा. तभी जाकर हमारा जो पोइट है, he is very angry. With their street long, heavy hung, yellow pollen, fog of fragrance, no wind could sift. The poet here says that these pollens, they're so heavy that even they stay in the wind and no wind can clear them. कोई विंड इनको क्लियर नहीं कर सकती है और ये बहुत हैवी है और हर एक जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं. ये रेड चंपक ट्रीज के जो पोलन्स है. No door could shut out from our black pillared house, whose walls had ears and eyes. Here the poet uses personification. He says that these pollens, no door, no house could get these pollens away, and particularly his own house, which is black pillared, and as per the writer, his house, they have the walls which have ears and eyes. यहाँ पे personification का यूज़ किया गया है. इसका मतलब ये है कि उसका जो घर है वो पुराना है और उसके घर के जो दीवारें हैं वो उनमें होल्स भी है, जो कि पोइट यही सोचता है शायद वो आइज़ है, उनको पर्सोनिफाई करता है. और ईयर्स, दैट मीन्स इसका जो घर है ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि उसके अंदर होल्स है, पुराना घर है और ये जो पोलन्स है सीधे उसके घर जो है आ जाते हैं. Scales, smells, bone creaks, nightly visiting voices, and were porous like us. And this house of his, it has scales. यहाँ पे simile का यूज़ किया गया है कि उसके मकान में scales हैं. There is smell in his house, bone creaks, those cracks in the walls, and the voices. And were porous like us, and those small holes, like human skin has those small holes, although the small pores of the skin we cannot see it, but इसके घर की जो walls है उसके जो holes है वो दूर से दिखते हैं और उन्हीं के थ्रू जो है ये पोलन्स जो है अटैक करते हैं, उन्हीं के थ्रू जो है ये पोलन्स अंदर आ जाते हैं. But mother, flashing her temper like her mother's twisted silver grandchildren's knickers, wet as the cold pack on her head, would not let us cut down a flowering tree. Now we know that the poet has a plan of cutting down these trees because these trees are a reason for the headache of his mother. But mother, she is reluctant. She does not want these trees to be cut down. यहाँ पे इस लाइन में कहा गया है कि उनका टेम्पर, उनका एंगर जो है, it is twisted. और मे बी दोज ग्रैंड चिल्ड्रंस निकर्स वो धूप में रखी गई है उस सिल्वर तार के ऊपर, तो दैट वायर इट इज़ ट्विस्टेड एंड इट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द ट्विस्टेड एंगर ऑफ हिज मदर बिकॉज शी इज़ वेरी एंग्री एंड probably she is sweating. That's why this line, wet as the cold pack on her head, and she does not allow the poet to cut down the trees. Here, for the first time, there is a conflict in the poem. On the one hand, the poet, being practical, wants to cut down the trees. On the other hand, his mother, being very traditional and superstitious, does not want these trees to be cut down. अब रीज़न क्या देती है उनकी मदर? Almost as old as her. These trees, they are as old as his mother. That means उसकी माँ ने बचपन से ही उन ट्रीज को देखा है, तो जितने ट्रीज की जो एज है उतनी ही उसकी मदर की भी एज है. Seeded, she said, and these trees, they have been seeded by a passing bird's providential droppings. और इनके जो सीड्स जो है वो तब सीड हो गए हैं जब एक ऊपर से जो बर्ड है उन्होंने इन सीड्स को ड्रॉप किया है. तो
एज पर हिज मदर ये एक गुड ओमन उसके लिए है कि ये बर्ड्स की वजह से ये पेड़ जो है, जब वो सीड्स उनने गिराए तो ये पेड़ उग गए हैं। तो इसकी मदर के लिए, बिकॉज शी बिलीव्स इन दीज ओल्ड बिलीफ्स, तो उसके लिए एक गुड ओमन है। अब ये क्या करते हैं उनके लिए, uh, उसकी माँ के लिए ये पेड़, टू गिव हर गॉड्स एंड हर डॉटर्स एंड डॉटर्स डॉटर्स basket full of annual flower, and annually every year she takes flowers from these red champak trees, and she distributes these flowers among his daughters and daughters daughters. हर साल वो इनसे यही फूल निकालती है, और कुछ तो गॉड्स को भी एक किस्म से वर्शिप के लिए यूज़ करती है, और डॉटर्स को भी देती है, और डॉटर्स की डॉटर्स को भी देती है। तो एक लिनिएज जैसा है, और हर एक के पास ये फूल जो है पहुंच जाते हैं। ये भी एक रीज़न है। एक तो ये रीज़न दैट शी कंसिडर्स दीज ट्रीज एज अ साइन ऑफ गुड ओमन, एंड सेकेंड बिकॉज दीज ट्रीज they give flowers annually, and she distributes these flowers. She uses these flowers for the sake of worship, and distributes these flowers among her daughters. तो इसी रीज़न की वजह से जो है वो नहीं चाहती है कि ये ट्रीज जो है ये कट होने। And for one line of cousins, a dower of migraines in seasons. रीजंस यही बनते हैं, एक तो ये गुड ओमन है, साइन ऑफ गुड ओमन है, और ये जो फ्लावर्स हैं ये इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग डॉटर्स एंड डॉटर्स डॉटर्स एनुअली, और वर्शिप के लिए भी यूज़ करती है। तो इसी वजह से ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा हेडेक इनको होता है, मगर ये रीजंस बनते हैं कि ये कहती है कि नहीं, ये ट्रीज जो है ये कट डाउन नहीं होने चाहिए। तो एक तरफ से अगेन जब पोएम एंड होती है तो वो सरदर्द लेने के लिए तैयार है, मगर जो अपने बिलीफ्स है उनको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। Now let's look at the themes of the poem. There are three major themes. One is love, second is old generation versus new generation, and the third is superstition. ये तो हमने तीनों इसमें डिस्कस की है। एक तो लव अगर हम देखें, देयर इज वन लव इज द लव ऑफ सन टुवर्ड्स हिज मदर, एंड द लव ऑफ मदर टुवर्ड्स नेचर। सन का जो लव है वो चाहता है कि रेड चंपक ट्रीज को मैं गिरा दूं, ताकि वो फर्दर जो सोर्स ना बने हेडेक का मेरी माँ के लिए। और इन रिटर्न जो मदर है, शी बिलीव्स, शी इज़ इन लव with her beliefs, she is in love with nature, she does not want those trees to be cut down. Then old generation versus new generation. The mother belongs to the old generation, and the son belongs to the modern new generation. The modern generation is very practical, and the old generation, they are still very reluctant to let loose of their beliefs. अपने beliefs को नहीं छोड़ना चाहते हैं। नई जनरेशन जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा सोचती है। एंड थर्ड इज सुपरस्टिशन। अगेन वी सी द सुपरस्टिशन इन द पोइट्स मदर, कि अगर मैंने ये ट्रीज काट दिए तो शायद गुड लक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि पोइट के अंदर ये सुपरस्टिशन बिल्कुल भी नहीं है, तभी वो चाहता है कि ये ट्रीज जो है मैं कट डाउन करूं। Let's take a look at the figures of speech used in the poem. As you know, figures of speech, they are an important part of a poem, and these are used for the ornamentalization of the poem, and this is what gives poetry its essence. Figures of speech की वजह से ही एक poetry में एक essence आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, a flowering tree almost as older as her. A simile has been used here. The line suggests a lifelong association of mother to the tree. मदर का उन ट्रीज के साथ जो एसोसिएशन है वो लाइफ लॉन्ग है, तो यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है। A black pillared house whose walls had ears and eyes. Again जैसा मैंने कहा, पोइम पढ़ाते पढ़ाते भी a personification has been used. Personification का मतलब कि inanimate objects को, जो lifeless objects हो, उनको ऐसे प्रेजेंट किया
किया जाता है जैसे कि उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज जो है बरी जाए, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. The wall is an inanimate thing, but it is suggested as it has all the human feelings and senses. So, the black pillared house. The poet tells us that it has ears and eyes. It means he has used personification. Then we have this line: scales, smells, bone creaks, nightly visiting voices, and were porous like us. And here simile has been used. The pores of the house have been compared with the pores of the human body. Thank you for watching this video. Keep encouraging me. Subscribe this channel and share so that others are benefiting.